Okay. Hello everyone. Hope you all are doing well. Exam पे बहुत बढ़िया भाव प्रिपरेशन करू अच्छा. समस्ते टिके जॉइन हो जाओ. जस्मिन yes प्रणाम. टिके सेशन को शेयर करनी हो. We'll start. Okay. Am I audible ना जस्मिन? Am I audible? स्क्रीन ठीक से देखा होची? Yes, pranam. Okay, we'll start. Solve this question. The sides of a triangle are given and the ratio is given 4:5:6. Amu kahibar achi this here the triangle is which triangle? Triangle is which triangle? Triangle is what? Question mark. Answer? Yes, Diptimayi pranam. Okay, start solving this one. Side ratio given achi. Side ratio kon given achi 4:5:6. Okay. तो ये triangle टा को type रा triangle? Whether it is acute angle triangle या obtuse angle triangle या right angle triangle हमको आंसर दबार अछि. और either acute angle or right angle. ये समझते टिके आंसर दे नबा. दीप्तिमय आंसर. जस्मीन आंसर फर्स्ट. समझते चैट बॉक्स रे आंसर दियो फर्स्ट. You have few information. Suppose I will say acute angle triangle. Look here. For a acute angle triangle, suppose this is A, B, C. Vertices are given and B is the largest angle. Angle B, it is the largest one. ताले B रो opposite रे, this is called small b, this side is called small b. ए जो BC side को मु नहीं आउची small a represent करची and AB side को मु small c. Clear? B largest angle, largest one. ताले small b, that is the largest side. तो for acute angle case, B square must be less than A square plus C square. This is the acute angle triangle. Okay. For a acute angle triangle, B square is always less than A square plus C square. Similarly, for a right angle triangle, मुझे तो गोटे right angle triangle draw करीबी, and here you know the condition. For a right angle triangle, you know the condition. Suppose this is vertices A, B and C, then B opposite is called hypotenuse. Okay, the small b here is nothing but hypotenuse. Here C is the perpendicular length and this A is what? Base. So here you know B square, okay, this is base, you can write in this way. B square, this is equal to how much? Now A square plus C square. Okay, Pythagoras theorem is okay. This one is a Pythagoras triplet. Answer D hobo ki. Okay, we'll check na. Answer D hobo ni. अरे एटी तो प्रॉपर्टी मु ऑलरेडी दे सारची ना. Here B square less than A square plus C square. माने largest side रो square it must be less than A square plus C square. Then it is a acute angle triangle. এই क्वेश्चन ने largest side कौन अछि 6. ता माने मु कहि परिबी 6x रो square. It is less than 4x रो square plus 5x रो square ना. Are satisfied na? So this is which triangle? Acute angle triangle. Okay. So you write down this property. If you know this property, you can handle. Now here I am drawing a acute angle triangle. Suppose this angle is B. This is vertices A, B and C. So B, this is B. This one is A. This one is C. So which property satisfied here? Now here B square, it must be greater than A square plus C square. This is for obtuse angle. Obtuse angle triangle. So if you know this three property, you can handle. Now if you observe this question, my answer is what? Acute angle triangle. Why? Because 4x square, 16x square, 25x square. If I add these two, okay, this will be greater compared to 6x square. So which condition satisfied for acute angle? Okay, triangle is acute angle triangle.
Jasmine understood na? This is acute angle triangle. Important, these three parameter you just remember. Once again, for a acute angle triangle, your b square, b means the largest side, okay? B square is less than a square plus c square, other two side. For right angle triangle, all you know, b square is equal to a square plus c square. And for obtuse angle triangle, the largest side of square, it is greater than other two side of square. Clear? Question number 2. Achha, before that, last class already I discussed key center of the triangle, particularly 4 type of center: centroid, orthocenter, incenter, circumcenter. Okay, this is very important. Do literature review. I will discuss mathematically, okay, where formulas are there. I will discuss the 4 points again here, but you have to practice. Clear? तो मु फास्ट डिस्कस करी नउछि, तापर हमें क्वेश्चन को आसी जिबा. Okay, look here. What do you mean by centroid, anyone? What do you mean by centroid? Who can answer? ठीक है, जल्दी फास्ट करिबा. Already you know these properties. What do you mean by centroid? Anyone in comment box? Amit sir, yes, namaskar. Subham, yes, namaskar. Jai Jagannath. Okay. Centroid means what? This is the point of intersection of median. In short here, pura brief frame mu explain korchi, okay? Just note it down, do the practice, okay? Point of intersection of median. And what do you mean by median? Suppose look here, I'll draw a triangle here, ABC. Now what is median? Now median is a line segment. It is a line segment drawn, जोटा को हमें draw करिबा from vertex to midpoint of opposite side. तो मीडियन कौन ना, इटा गोटे लाइन सेगमेंट आमे वर्टेक्स रु ड्रॉ करिबा, कोठी की ड्रॉ करिबा ना मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड होची बीसी, बीसी रो मिड पॉइंट, ता माने बीडी इज इक्वल टू सीडी. ए जो पॉइंट मिड पॉइंट बीसी रो मिड पॉइंट को आमे जॉइन करने ले लाइन सेगमेंट. सिमिलरली मु आ गोटे मीडियन ड्रॉ करची बीई, तो बीई माने ई पॉइंट कोन करची ना ए सी को दी भाग रे डिवाइड करची. सिमिलरली आई विल जॉइन अनदर मीडियन हियर. This is CF. These three are all, माने AF is equal to BF. So point of intersection of a median is called centroid. ये जो point of intersection को मुझे भी centroid, that is G. Clear? Important key point, and I think all you know, you do the literature review. मुझे खाली mathematical form रे को represent करची. Centroid divides the median in 2:1 ratio. Centroid divides the median in 2:1 ratio. माने 2 part कोठू ना vertex रू, and this is 1 part. Similarly this one is 2 part, this one is 1 part. This one is 2 part, this one is 1 part. तो मु ताको mathematically एमती लिख परिबी ना AG divided by AD, this is equal to BG divided by BE, that is equal to CG divided by CF, that is 2/3. अरे this ratio is 2/3. This is 2 part, total is 3 part. A median टा होची 3 part. So 2:3 ratio. Clear? Similarly तमे आपको एमती भी represent कर परिबो. Second one, GD divided by AD, that is equal to GF divided by CF, that is equal to GE divided by BE. This is 1/3. So this point you just माने note it down, okay? Another important theorem you can apply here. That theorem is called Apollonius theorem. What is Apollonius theorem and where you can apply? In case of median, a theorem ta applicable. जो जगह रे median ऊपर discussion ही थी ना, सही जगह रे तमे Apollonius theorem, centroid, ये सब terminology को apply कर परिबो. तो Apollonius theorem is what? Anyone? In the comment box, anyone? What is Apollonius theorem? Apollonius theorem कौन ना, एटा होची गोटे मीडियन AD, समस्त AD ऊपर फोकस करो.
मु जदि ए बी रो स्क्वायर और ए सी रो स्क्वायर नहीं होची ना सम ए बी रो स्क्वायर प्लस ए सी रो स्क्वायर रो सम दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए जो मीडियन अच्छी एडी रो स्क्वायर प्लस एनी लेंथ तुम बीडी कंसीडर करो बा सीडी कंसीडर करो बीडी कंसीडर करो बा सीडी कंसीडर करो क्लियर तुम कहो सर कोटा कंसीडर करू अरे एग्जाम रे रिक्वायरमेंट हिसाब रे कंसीडर करिवो एग्जाम रे रिक्वायरमेंट हिसाब रे तामने इटा को वंस अगेन मु एमती लिख दे परिबी ए बी रो स्क्वायर प्लस ए सी रो स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डी रो स्क्वायर मु एटा को नै गेले सी डी रो स्क्वायर सिमिलरली मु आप लिख पारि आप लिखले मु कौन लिखी ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ बी ई रो स्क्वायर प्लस एनी लेंथ यू कंसीडर सपोज ए ई रो स्क्वायर अरे क्लियर ना सिमिलरली आटा पई तुम लिख दे पारिबो एबे देखो सी एफ पई मु लिखुची सी एफ पई कौन लिखिबी ए सी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर that is twice of CF ro square plus any length I can consider suppose I consider AF ro square this is called Apollonius theorem एटा को हमें कहबा Apollonius theorem and important Apollonius theorem important आउटे रहिला midpoint concept here midpoint concept yes life and style hub okay good afternoon look here according to midpoint theorem you know E and F are what? E and F are midpoint of these two side. Arre E is the midpoint of here I will write E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB. So if these two are the midpoint तो मु जदि याको जॉइन करने भी ताले ई एफ इट इज पैरेलल टू व्हाट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एवं ई एफ रो लेंथ कोन हे जिवो पिला माने ई एफ रो लेंथ हे जिवो हाफ ऑफ बी सी ई एफ रो लेंथ हे जिवो हाफ ऑफ बी सी तुम कहबो कोन पई सर काइना एटा वन पार्ट ई बी वन पार्ट क्लियर तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मु जानची टोटल हे गला टू पार्ट ताले मु आको कोन नै गली ए दीटा ट्रायंगल को तुम जदि कंसीडर करबो ए एफ ई आउ ए बी सी दे आर व्हाट सिमिलर ट्रायंगल साइड रेशियो इक्वल ही थाए साइड रेशियो तो ए माने ए साइड रो टोटल साइड रेशियो समान ही जीवो ताले 1/2 टोटल साइड होची 2 पार्ट आ गोटे पार्ट होची 1 पार्ट तो 1/2 रेशियो ही जीवो ई एफ बाय बी सी हे गला 1/2 ई एफ बाय बी सी जेतले 1/2 ताले ई एफ केते जीवो हाफ ऑफ बी सी so these are the property I think already you know the theory part just do remember आमे क्वेश्चन एरा सॉल्व करबा एरा को सब दरकार होबो क्लियर दिस प्रॉपर्टी क्लियर नाउ आ गोटे भी पॉइंट तुम जानछ दिस इज द जी मु जदी एटा को भी जॉइन करनु छी ना ई जी आल्सो सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल ई एफ डी ई एफ डी पई भी जी कोन ना सेंट्रोइड क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रोइड lots of more informations are there points are there do the literature review this is important clear now important one is orthocenter what do you mean by orthocenter anyone orthocenter are anyone who can explain orthocenter are orthocenter is the point of intersection of altitude last thila centroid point of intersection of median orthocenter is what point of intersection of altitude means height माने कौन ना height clear तुमको सर what does it mean देखो triangle ABC in triangle ABC मुझे दी ए लाइन नु गोटे altitude ड्रॉ करने ली AD B vertex रू आ गोटे altitude ड्रॉ कर ली altitude means height let's say this is BE and C रू ड्रॉ कर ली CF okay this angle is 90 look in case of median कौन थिला ना BD is equal to CD in case of median BD is equal to CD but in case of altitude here BD is not equal to CD important this is height this angle 90 ए जो point of intersection को मु कौन कहबी orthocenter O now this is very important एबे जो point कहूची you can see
one question in any exam, competitive exam, clear, particularly for your exam, okay, RRB. ए जो एंगल टा BOC एंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल ए मते कहि के देखाओ, समस्त आंसर कमेंट बॉक्स रे लिखाओ BOC एंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल ए केते हबो, इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, यस इन टर्म्स ऑफ एंगल ए एंगल टा केते हिजिबो BOC इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, पिलाने टिके ट्राई करिबा BOC एंगल इन टर्म्स ऑफ ए माने ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल, ए BOC रो ऑपोजिट वर्टेक्स रे कोन अछि ए अछि, तो BOC इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, BOC इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, एनीवन जस्ट कमेंट बॉक्स रे लिखिनियो, अरे समस्ते आंसर दियो, ऑलरेडी दिस थिंग यू नो, ओके हियर जस्ट आई एम रिकॉलिंग एवरीथिंग, रिवाइज एवरीथिंग, मुई जगह खाली रिवाइजिंग कर दोची तम पई. Last we discussed what centroid, point of intersection of a median is called centroid, key point, centroid divides the median in 2:1 ratio from vertex, माने centroid कौन करची ना से जो median को 2:1 ratio रे divide करची कोठू ना vertex रु, okay that is the important one. सेंट्रोइड जोठी जोठी तुम देखिबो से जगह मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर परिबो, से जगह अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर परिबो. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑर्थोसेंटर तुम ए सदाल देखिबो मैक्सिमम जगह रे ए BOC एंगल ऊपर डिस्कशन हेई थाए, माने BOC एंगल तुमको बाहर करिवार अछि इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल ए, माने इन टर्म्स ऑफ ए मते आंसर टा को, इन टर्म्स ऑफ ए मते आंसर को, ओके ओके लुक हियर, मुझे दी लुक हियर इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC टिके समस्ते आंसर के दउन प्रैक्टिस टिके करो, in triangle BEC, okay let's say this angle is theta, ताले मोर theta केते हिजिवो ना, look here this is 90, ताले sum of these two angle is what, माने entire C, अरे entire C and this one, this is how much 90, ताले theta is equal to 90 degree minus C angle, okay. Now look at triangle BFC, इन ट्राइंगल BFC सपोज मु ए एंगल टाको नै गेली फाई, तले फाई केते हिजियो पिला माने फाई BFC देखो BFC मते दरकार ए एंगल फाई, फाई केते हिजियो ना फाई हिजियो, लुक दिस इज 90, तले एंगल B आउ ए फाई मिसी केते 90, तले फाई केते गेला 90 डिग्री माइनस एंगल B, समझ तू बुझा पड़ला. एबे मते दरकार कोन ना, मते दरकार BOC, मते दरकार BOC, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई, अरे थीटा प्लस फाई, थीटा फाई तो ऑलरेडी मु बाहर करिक रखिची, माने दिजंकर सम, तले केते गेला 180 डिग्री, दिजंकर सम केते हिजिवो ना 180 माइनस B माइनस C, 180 डिग्री माइनस एंगल B माइनस एंगल C. मु जदी ब्रैकेट को ओपन करची दिस गेट कैंसिल, ए माइनस माइनस हिजिवो प्लस, तमने मतलब मिलला कोन एंगल B प्लस एंगल C. आ तुम जानचो एंगल B प्लस एंगल C कोन ना 180 डिग्री माइनस एंगल A, तामने मु कहि दे परिबी BOC एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, तामने ए एंगल A टा को एपट साइड को नै आसिले कोन हे जिवो, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर. अरे सप्लीमेंट बुझो ना, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वन एंगल इज सप्लीमेंट टू अदर. अरे दीटा एंगल लो सम जदी 180 डिग्री होउची तले गोटे एंगल आ गोटे एंगल लो सप्लीमेंट, एटी देखो सम ऑफ BOC एंड एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तमने से माने सप्लीमेंट टू ईच अदर, तमने ए एंगल, ऑल ऑफ यू लुक हियर BOC एंगल एंड एंगल A, they are supplement to each other, they are supplement to each other, their sum is 180 degree. important formula. अच्छा तुम एमती भी लिख दे परिबो, जने लिख दे परिबो सर सपोज AOC रो ऑपोजिट वर्टेक्स रे की अछि एंगल B, तले मु लिख दे परिबी AOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B. सिमिलरली मु AOB को लिख दे परिबी 180 डिग्री आर ऑपोजिट वर्टेक्स रे कोन अछि एंगल C माइनस एंगल C. अरे क्लियर ना, if I derive this one you can understand these two, clear.
So always remember, in case of orthocenter, ortho means height, means 90 degree. Clear? In case of orthocenter माने discussion होची altitude ऊपरे. Angle BOC in terms of opposite vertex angle, they are supplement to each other. Their sum of angle is what? 180 degree. Clear? So this is all about orthocenter. This is the key formula. Orthocenter आमे केमती पाइबा बुझी पारलो? Point of intersection of altitude होची orthocenter. Altitude कौन ना गोटे line segment, perpendicular line segment drawn from vertex to opposite side. Or altitude line segment, perpendicular line segment drawn from altitude to opposite side. Clear? एबे हमें डिस्कस करिबा incenter. समझते स्क्रीनशॉट भी नहीं जाई पारो. Okay? Now important, incenter. What is incenter? Now point of intersection of internal angle bisector. तुमको सर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन? लुक हियर, ए बी सी लास्ट क्लास मु क्वेश्चन भी करी थी बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट. मु ए एंगल ए रो तार गोटे इंटरनल बाइसेक्टर नहीं गली, एंगल बाइसेक्टर नहीं गली. एंगल बाइसेक्टर माने एंगल ए को दी भाग रे डिवाइड करने ली. दिस इज एंगल ए बाई 2, दिस वन ऑल्सो एंगल ए बाई 2. सिमिलरली एंगल बी को भी दीटा पार्ट रे डिवाइड करने ली. दिस इज बी बाई 2, दिस इज ऑल्सो बी बाई 2. Similarly C, ये जो point of intersection को मुझे कौन कही भी? This point of intersection is called incenter. This is incenter I. Okay, this let's say this point is D, this point is E, this point is F. अच्छा जेमिति मु लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करथिली. ओके, ऑर्थोसेंटर केस रे कि ए जो ए एंगल टा मु बाहर करथिली इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल. एई जगह रे पिला माने तमे आंसर देई परिबो. एई जगह रे मते कहि परिबो BIC माने लुक एट दिस एंगल. BIC इन टर्म्स ऑफ एंगल A. BIC आर आंसर कौन हम इन टर्म्स ऑफ एंगल A कौन ही जीवो? ओके यस आंसर BIC in terms of angle A. Look here, you know BIC is what? Now BIC here, this is equal to 180 degree because look at this triangle here. BIC is 180 degree minus sum of these two, माने angle B by 2 plus angle C by 2. अरे ये angle B by 2 plus C by 2 कितने? You know angle A by 2 plus angle B by 2 plus angle C by 2, this is equal to 90 degree. ताले angle B by 2 plus angle C by 2 कितने ही जीवो? ना 90 degree minus angle A by 2. अरे yes or no? ये जगह रे put कर दे भी तो this is 180 degree minus 90 degree minus angle A by 2. ताले कितने ही गला ना 90 degree minus minus plus angle A by 2. So this one is 90 degree plus angle A by 2. Clear? Another important point, suppose in case of incenter ABC, a angle ला internal angle bisector, suppose AD. Okay, this is angle A by 2, this one also angle A by 2. इस जगह रे दीटा को साइड रेशियो माने AB by AC कौन है जीवो ना BD divided by CD. BD divided by CD. This is also important formula. Okay, this one you do remember. अच्छा similarly you can find AIC. AIC ये जगह रे AIC कितने जो पिला माने AIC, this is equal to 90 degree. तार opposite vertex रे कौन अच्छी B, तो plus angle B by 2. Similarly AOB, sorry O तो नुए I, AIB, this angle is equal to what? 90 plus angle C by 2. Okay, मन रही जीवो easy. Clear? This is incenter. In case of incenter, I will get incircle. केमती incircle पाया पिला माने गोटे incenter. Suppose ए triangle पाई incenter ही होची ए point I. मु ए जगह गोटे perpendicular drop करने ली BC ऊपरे. तो हमको बस सर BC ऊपरे कौन पाई? कौन AB ऊपरे ड्रॉ करी होबनी की? हबो AC ऊपरे भी करी होबो. अरे को गोटे करे नहीं जाओ, को गोटे साइड ऊपरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. ओके, मु जदी एबे आकु रोटेट करिवि, मु आकु रोटेट कले मु इनसाइड द ट्रायंगल गोटे सर्कल पाइली ना.
ए सर्कल को कहबी इन सर्कल एबे ए जो एटा को मु कोन गेली आई एम इज नथिंग बट स्मॉल आर रेडियस इन रेडियस ओके क्लियर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमसेंटर 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 पिला माने कोन हबो ओके लुक हियर मु एबे कोन करली ना साइड दिस इज ए दिस इज बी दिस वन इज सी मु बीसी ऊपर गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करली परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्लियर लेट्स से दिस पॉइंट सिमिलरली ए बी ऊपर गोटे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर सिमिलरली ए सी ऊपर गोटे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्लियर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड सर्कमसेंटर अच्छा सर्कमसेंटर को मुझे नहीं सी डैश क्लियर सी डैश क्लियर एबे मु कौन करची ना वर्टेक्स रो ए पॉइंट को जॉइन कर नउची फ्रॉम वर्टेक्स इफ आई विल जॉइन दिस ओके दिस इज नथिंग बट कैपिटल आर ए आर को नहीं कि मुझे गोटे सर्कल टे रोटेट करी ना तो आउटसाइड रे मते गोटे सर्कल मिल जिवो ओके दिस वन इज कॉल्ड व्हाट सर्कम सर्कल अच्छा लीव दैट सर्कम सर्कल हमको ये गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करिवार थिला ए जो एंगल बी सी डैश सी अरे बी सी डैश सी इन टर्म्स ऑफ एंगल ए ओके केते ही जीवो कहीं ऑर्थोसेंटर केस रे भी ए टाइप रो गोटे एंगल हमें डिस्कस करछे इन सेंटर केस रे भी ए टाइप रो एंगल डिस्कशन करछे तो एई जगह रे कोन ही जीवो अरे एई जगह रे एंगल कोन ही जीवो बी सी डैश सी केते ही जीवो सपोज लुक हियर दिस इज ए सर्कल okay this one is called chord eta circle lo kon chord this is major segment this one is minor segment mu jodi and you know in major segment everywhere all angles are equal all angles are equal means jodi a angle theta ye bhi theta this angle also theta everywhere angle is theta अरे गोटे chord रहिला ना मेजर सेगमेंट रे जो जगह रे तमे गोटे लाइन ड्रॉ करो ओके ट्रायंगल फॉर्मेशन करो से जगह रे एंगल कोन हिजिबो थीटा सिमिलरली जदि ए एंगल ही गला फाई माइनर सेगमेंट रे तले सब जगह एंगल केते हिजिबो फाई ओके तो लुक हियर सेम थिंग आई विल ड्रॉ अगेन सो लेट्स से ए बी इज ए chord and if this angle is theta तले फ्रॉम सेंटर दिस एंगल इज व्हाट अरे फ्रॉम सेंटर दिस एंगल इज 2 थीटा सेंटर से एंगल केते हिजिबो 2 थीटा क्लियर अरे सेंटर से एंगल केते हिगला 2 थीटा सिमिलरली एई जगह रे मु जदि बीसी को गोटे chord नै गली BC is a chord and if this angle is A ए जो एंगल टा ही गला A ताले from center this is what ना 2A अरे from center this is जो 2A तमने B C डैश C को मुझे लिख दी पारी भी 2 twice of angle A this is the very important formula okay बुझा पड़ला शुभम clear clear Shubham 2A yes 2A okay so twice from center this is what 2 theta if this one is the theta and theta is A here tale from center this is the 2A clear ebe solve kariba question acha ida कहलो sum of 3 altitude of a triangle it is equal to sum of 3 side or less than sum of 3 side या 1/√2 times of sum of the sides या half of sum of the sides को option correct होगा in case of altitude which one is correct एटी के देखो मु कौन कली ना बी रु गोटे altitude ड्रॉ करनेली बा राइट एंगल ट्रायंगल भी से किसी देनी कंडीशन नो कंडीशन गिवन तो आम को भी ट्रायंगल नहीं जाई परिबा लेट्स से ए बी सी इज ए ट्रायंगल वर्टेक्स बी रु मोटे एल्टीट्यूड ड्रॉ कली वर्टेक्स ए रु वर्टेक्स बी रु आ गोटे एल्टीट्यूड ड्रॉ कली वर्टेक्स सी रु भी आ गोटे एल्टीट्यूड ड्रॉ करनेली ओके तमने दिस इज ए डी बी ई सी एफ
क्वेश्चन कौन देइछि ए जो एल्टीट्यूड लुक एट दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC एटा 90 डिग्री 90 रो ऑपोजिट रे कौन थाए हाइपोटेनियस अरे दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ADC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड यू नो राइट एंगल एट D राइट एंगल रो ऑपोजिट रे जो साइड थाए दैट इज हाइपोटेनियस तो AD ये मुझे कहीपरि AD इज ऑलवेज लेस देन व्हाट AC अरे AC हो गला तुम हाइपोटेनियस ताले AD कौन हो लेस सिमिलरली मु गोटे ट्रायंगल कंसीडर कर परिबी इन ट्रायंगल BFC इन ट्रायंगल BFC एटा 90 डिग्री आर ऑपोजिट रे कौन रहिला आर ऑपोजिट रे रहिला BD ताले आर ऑपोजिट रे रहिला BC ताले मु कौन कहि परिबी ना हियर CF it is always less than what BC. Similarly, if I will consider another triangle ABE in triangle ABE okay ताले मु ए ट्रायंगल ले कौन कहि परिबी ना BE it is always less than AB BE less than AB ता माने sum of these three altitude अरे sum of these three माने AD plus CF plus BE it is always less than what sum of three side माने AB वा लिख दियो AC plus BC plus AB अरे अंडरस्टूड ना तो which one is correct option B yes शुभम सर क्वेश्चन ने सबू आज मुंड उपरे अरे दीज आर वेरी इजी थिंग ऑर्थोसेंटर इनसेंटर सर्कमसेंटर एरा खाली टिके मन रखिबार अछि फॉर्मूला क्लियर एटा मन रखिबार अछि नले वीडियो को आउ थरे देखि नियो जस्मिन बहुत इजी अछि आ प्रॉपर्टी बेस्ड तमने ई जगह तमे प्रॉपर्टी मन रखिना दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट क्लियर प्रॉपर्टी मन रखने ले फॉर्मूला तो मन रखिबार अछि ईच सेक्शन ने गुटे गुटे फॉर्मूला एतिक मन रहिबनी ना क्लियर दिस वन करेक्ट अरे अंडरस्टूड ना लेस देन सम ऑफ ऑल थ्री साइड ओके अरे सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इट इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्लियर प्रोसीड करिबा एटा ट्राई करो टू मीडियन PS एंड RT PS रो वैल्यू दे दीची 9 सेंटीमीटर RT रो वैल्यू दे दीची 6 सेंटीमीटर पचारची कौन फाइंड द लेंथ ऑफ RS डायग्राम ड्रॉ करो ओके फर्स्ट टू रीड द क्वेश्चन ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम विदाउट अ डायग्राम यू कैन नॉट हैंडल ओके तो डायग्राम केतेबेले तुम ड्रॉ कर परिबो जदि मीडियन ऊपर तुमरो इंफॉर्मेशन थिबो नॉलेज थिबो नले केमदि ड्रॉ करिवो एबे भी एक्सप्लेन कली ना मीडियन तो समस्ते टिके ट्राई करिबा व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट टिके जल्दी जल्दी आंसर दियो आई विल गिव यू 30 सेकंड देन आई विल सॉल्व ये पागला क्रिएटिविटी सर गुड आफ्टरनून बहुत लेट रे जॉइन करछ वीडियो को स्टार्टिंग रु देखि नबो क्लियर ओके लुक हियर इन केस ऑफ मीडियन अच्छा ट्रायंगल इज गिवन PQR PS is a median so from vertex P I will draw a median and you all know median will divide this QR into two part so this is PS ताले ये हेगला QS ये हेगला SR लेंथ होची इक्वल ओके एंड RT आ गोटे मीडियन मु ड्रॉ कली RT इट विल डिवाइड दिस PQ into two part RT ओके अच्छा हियर PS रो वैल्यू तुमको दे देची 9 सेंटीमीटर ओके ए जगह PS रो वैल्यू केते दे देला 9 सेंटीमीटर आउ कोन गिवन अछि RT रो वैल्यू गिवन अछि 6 ए RT रो वैल्यू गिवन अछि 6 सेंटीमीटर ओके पचरची कोन फाइंड RS ए RS हमको पचरची RS केते ही जीवो ओके ना सॉरी नी you watch this one Jasmine yes answer is 6 I will check it okay so this one is what this point of intersection is called what ebe discuss करथिली
अरे in case of median, point of intersection is what? Centroid. अरे what is centroid? Point of intersection of median is called centroid. जदि PS आउ RT होची median, तले जो point से मैंने touch करथिबे, intersect करथिबे, that is your centroid. Okay? And you know centroid will divide this median into two part. This is 2, this is 1. अरे centroid will divide the median in 2:1 ratio. Centroid will divide the median in 2:1 ratio from vertex. ताले vertex रू एटा हितिबो 2 part, एटा हितिबो 1 part. ताले मते आराम से GS रो वैल्यू मिल जिवो. अरे GS रो वैल्यू केते हिगला? GS रो वैल्यू this is equal to 9 into 1/3. ताले हिगला 3 सेंटीमीटर. ओके अच्छा क्वेश्चन ने कौन देइची ए जो एंगल टा भी दे देइची. अरे क्वेश्चन ने देइची ए जो एंगल टा ना दैट इज आल्सो 90 डिग्री. से मैंने इंटरसेक्ट के कोठी होछंती ना एट राइट एंगल. ए एंगल टा दे देइची राइट एंगल. क्लियर से मैंने जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट करछंती सेटा 90 डिग्री. आज जदी 90 डिग्री हे गेला एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हे गेला. मते ए राइट एंगल ट्रायंगल लो ए वैल्यू टा मिल गेला केते 3 सेंटीमीटर. एबे मते कोन बाहर करिवार अछि आरजी. आरजी केते हि जिवो ना ए लेंथ देइची 6 सेंटीमीटर. आउ ये हिथिबो 2 पार्ट, ये हिथिबो 1 पार्ट. ताले मु आरजी को कोन लिख देबी ना 6 into 2/3. तो ये हे गेला 3 into 2. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. यदि ये हे गेला 3, ये हे गेला 4, ताले ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल लो जो आरएस कोन हे गेला हाइपोटेनियस. ताले आरएस रो वैल्यू कोन हे जिवो? आरएस इज इक्वल टू जीएस रो स्क्वायर प्लस आरजी रो स्क्वायर रो रूट ओवर. ताले ये केते हे गेला 9 plus 16 रो रूट ओवर 25 रो रूट ओवर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. आंसर इज 5 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सर करई देबे ना मोर 5 आसिला देखिबा. हां ये आंसर इज 5. अरे आंसर इज 5. शुभम आंसर इज 5. yes correct answer 5 centimeter. very good. okay option C is correct. good. done. I will proceed. next proceed करिबा. या any doubt here? कार किछि आउ डाउट रही छी ए क्वेश्चन ने. वेरी इजी वन. क्वेश्चन ने कोन देइची ना दीटा मीडियन देइची. मीडियन इंटरसेक्ट करची कोठी ना एट राइट एंगल. तमने ए एंगल दे देइची 90. ए पीएस रो वैल्यू देइची 9 सेंटीमीटर. आरटी रो वैल्यू देइची 6 सेंटीमीटर. तो आमे आराम से जीएस बाहर करनबा. जीएस केमदी बाहर करिवो? दिस इज 1/3 ऑफ दिस टोटल पीएस. 1/3 ऑफ पीएस. पीएस होची 9 तले 3 सेंटीमीटर बारी हला. आउ आरजी केमदी बाहर बा जी आर केमदी बाहर करिवो? बा आरजी ना आरजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6. 2/3 ऑफ 6 तले ये बारी हला केते 4 सेंटीमीटर. पकई देली पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. नेक्स्ट प्रोसीड करिबा. समस्त ट्राई करो. समस्त ट्राई करो. एबे ही डिस्कस करिछि फॉर्मूला. आर आंसर आसीबा दरकार. Jasmine, Subham, you just try, tell me the answer here. This one is easy one. एबे डिस्कस करछे फॉर्मूला. इन केस ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर रु जो एंगल से केते जिवो इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल. अरे डायग्राम माने बुझी परछ ना क्वेश्चन देखि की माइंड रे डायग्राम आसीबा दरकार. ABC is a triangle given. okay the internal bisector of ACB এই angle लो bisector तले बने देली. this is C/2. this is also C/2. ABC रो bisector ABC बने दबा. this is B/2. this angle is B/2. क्वेश्चन कौन पचारची ना they meet at X. क्वेश्चन पचारची BXC in terms of opposite vertex angle. opposite vertex रे की अछि A ना in terms of A. in terms of A एभे ही करैथिली फार्मूला. समस्त टिके देखिनियो. in case of incenter angle कोन आस्थिला 90 डिग्री प्लस एंगल A/2. अरे फार्मूला 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 चेक करिनो. जो माने लेट रे जॉइन करछ 90 प्लस एंगल A/2 तले मोर आंसर कोन हे जिवो? ए जगह रे आंसर कोन हे जिवो? BXC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2. एटा केते देइची? एंगल A केते देइची? एंगल A BAC दिस इज 30 डिग्री गिवन.
ताले 90 प्लस 30/2 15 तो 105 डिग्री 105 डिग्री ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट यस गुड शुभम तो प्रॉपर्टी बेस्ड ना अरे प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर ऑल दिस प्रॉपर्टी यू कैन हैंडल प्रॉपर्टी मन न रखिले क्वेश्चन सॉल्व होबनी once again जो मैंने लेट रे जॉइन करछ 3 formula I will discuss again in quick fashion look here orthocenter point of intersection of altitude is called orthocenter एई जगह रे BOC रो एंगल BOC रो एंगल in terms of opposite vertex angle कोन आछि they are supplement to each other माने BOC plus angle A is equal to 180 degree look here BOC plus angle A is equal to 180 by BOC is equal to 180 minus angle A clear do remember this one next आमे डिस्कस करथिले इन सेंटर in case of in center ए एंगल केते हिजिबो B suppose this is I तो BIC केते गेला in terms of opposite angle ना 90 plus angle A by 2 90 plus angle A by 2 done similarly in case of circumcenter जदि ए एंगल हमको पचारची BC dash C पचारची in terms of opposite vertex angle ए जगह केते गेला 2A अच्छा another important key point in case of median altitude internal angle bisector एटा हमें कोठू ड्रॉ करछे वर्टेक्स रु अपोजिट साइड को ड्रॉ करछे बट हियर एई जगह रे सर्कमसेंटर केस रे ए जो पॉइंट में हमें जो ड्रॉ करछे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर एटा वर्टेक्स ए को टच करि पारे न भी करि पारे फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल इट विल टच अदरवाइज नो एटा वर्टेक्स रु ड्रॉ करा हेनी हमें एई साइड बीसी रु हाफ लेंथ नहीं की कट करछे ओके राउंडर रे अंडरस्टूड ना दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर इट मे टच द वर्टेक्स और मे नॉट ये वर्टेक्स को टच करि पारे न भी करि पारे क्लियर किछटा पर्टिकुलर ट्रायंगल पई टच करिवो फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल अदरवाइज नो डन सो दिस इज व्हाट दिस इज सर्कमसेंटर दिस वन इज सर्कमसेंटर एई जगह रे सेंटर रु केते एंगल हे गेला दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सिमिलरली तुम कहबो सर ठीक है एई एंगल टा बाहर कर दियंतु ए सी डैश सी ताले ए सी डैश सी रो ऑपोजिट वर्टेक्स कोन ना बी ताले कोन हिजिबो ट्वाइस ऑफ एंगल बी सेई जगह रे एसी एक्ट एज कॉर्ड ए जो एसी नहीं कि सेटा कॉर्ड भाबे रे काम करिवो कॉर्ड बुझी परछो तो लुक हियर दिस AB इज द कॉर्ड गोटे रहिला मेजर सेगमेंट एटा होची माइनर सेगमेंट in one segment if angle is given theta ताले from center that angle is 2 theta property of the circle clear आकु टिके भलो की कवर करनबो पिला माने this is very very important तो नेक्स्ट सेशन भी आमे सर इन सेंटर टा अगेन टिके रिकॉल करी देबे इन सेंटर कोडे वाला ओके आउथरे ड्रॉ कर दियो ना अरे इन सेंटर तो इन सेंटर मीन्स व्हाट अरे इन सेंटर केमती हमें ड्रॉ करिबा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सपोज दिस इज ए वर्टेक्स बी एंड सी ए एंगल लो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तमने दिस एंगल इज a by 2 ए एंगल बी a by 2 एबे एंगल बी रो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिस इज b by 2 एटा भी b by 2 सिमिलरली फॉर c इंटरनल एंगल बाइसेक्टर c by 2 क्लियर एटा हे गला i इन सेंटर i क्वेश्चन कौन पचार थाए ना यू फाइंड BIC in terms of opposite vertex angle माने फाइंड BIC एबे जेंति गोटे क्वेश्चन सॉल्व कले BIC in terms of opposite vertex angle A आमे जान से in this triangle A plus B plus C अरे sum of three angle is equal to how much 180 degree मते दरकार BIC तो मु आपको लिख दे परिबी 180 डिग्री माइनस ए एंगल एंड दिस एंगल ता माने b by 2 प्लस c by 2 अच्छा b by 2 प्लस c by 2 केते भारीबो मु जदी आरा हाफ नहीं होउची एंगल a by 2 प्लस एंगल b by 2 प्लस एंगल c by 2 दिस इज इक्वल टू 180 by 290 डिग्री ताले b by 2 प्लस c by 2 कोन हे जिवो आ जगह मु लिख परिबी 90 माइनस एंगल a by 2 तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल a by 2 टिके सिंप्लीफाई कर देले मते केते आंसर मिलला ना 180 माइनस बिकम प्लस ओके एटा को माइनस कर देली 90 ओके डायरेक्ट लिखि दबा आको ओपन काई करबा
सो दिस इज 90 डिग्री ए माइनस माइनस प्लस हो गला एंगल ए बाई टू एंगल ए बाई टू क्लियर सर आपण सह केमी कंटाक्ट अरे ये मीडिया रे कंटाक्ट करवा कौन अच्छी क्लियर ओके सो दिस इज फॉर टुडे सेशन कंप्लीट समस्त स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ना आउ थे वाच कर नब ओके तो ओके नेक्स्ट क्लास विथ न्यू कॉन्सेप्ट हमें देखा हवा ओके सो थैंक यू